Focus, ideate, innovate, enable. The widespread Gangetic Plain, an agricultural powerhouse, and a strong industrial security that has led to abundant investment opportunities. This is Uttar Pradesh, a land of untapped potential. उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश, 22 करोड़ की हमारी आबादी है, यानी देश का सबसे बड़ा बाजार। जहाँ बाजार होगा तो वहाँ इन्वेस्टमेंट भी होगा। हम बाजारी नहीं रहेंगे, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। एक दूसरा, सबसे ज़्यादा यूथ हमारे पास, पढ़ा लिखा यूथ हमारे पास, ऊर्जावान और प्रतिभावान यूथ हमारे पास, सबसे अच्छी कनेक्टिविटी हमारे पास, सबसे अच्छा वाटर रिसोर्सेज हमारे पास। देश में फूड ग्रेन में नंबर 1 पर हम, शुगर केन में नंबर 1 पर हम, तो फिर हम पीछे क्यों रहेंगे? इन संभावनाओं को हकीकत में बदलना। With just a few days left for the first ever UP Investor Summit, the state is gearing up to showcase its might to the world. And in today's episode, we look at some of its focus areas where the government is inviting investments from domestic and foreign players. These focus sectors are civil aviation, ITES, dairy, electronics manufacturing, tourism, MSME, renewable energy, films, handloom and textile, and agro and food processing. उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है और इस व्यापक संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने का समय आ गया है और इसलिए इन्वेस्टर समिट हम लोग करने जा रहे हैं। हमने अपने यहाँ व्यापक औद्योगिक और रोजगार निवेश से संबंधित अपनी पॉलिसी बना दी है। टेक्सटाइल की अलग है, MSME की अलग है, एविएशन की अलग है, IT की अलग है, अलग अलग फार्मा की अलग है, डिफेंस की अलग देने जा रहे हैं। अलग अलग उसको हम लोग इसके अंतर्गत ले लिए हैं और लैंड बैंक हम लोगों ने दिया है। लोग अपने अनुसार जो फोकस सेक्टर हैं उसमें आकर के अपना यहाँ पर उनके द्वारा जो भी MOU के लिए जो उन्होंने अपनी कार्रवाई आगे प्रारंभ की है उस दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। टीम कार्य कर रही है उसमें। In terms of net state domestic product, Uttar Pradesh has emerged as the second largest economy in India after Maharashtra. Agriculture, the backbone of the state, is leading occupation in Uttar Pradesh, and that's the result why the state accounts for 19% share in the country's total food grain output and contributing 8% to India's GDP. With the aim to boost the state's economy, the state government has laid down the food processing industry policy that has opened the doors to invest in the establishing micro and small processing industries. Some salient features of the policy to be discussed will be additional grants in aid, capital interest rate subsidy, human resource development grant. जहाँ तक कृषि का सवाल है तो कृषि का एक तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है इस प्रदेश में और बहुत ज़्यादा विविधता है, चाहे अनाज हो, चाहे फल सब्जियां हैं या दलहन है, तिलहन है, हर कुछ आपको इस प्रदेश में उपलब्ध है और सरप्लस है जिसके की प्रसंस्करण की प्रोसेसिंग करने की असीम संभावनाएं हैं। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है जहां देश और विदेश के तमाम निवेशक आकर्षित होंगे, आएंगे और बाद में यहां अपना कारोबार भी प्रारंभ करेंगे।
Uttar Pradesh has about 2.58 lakh handloom weavers and about 4.21 lakh powerloom weavers. The government intends to weave the glory of Uttar Pradesh by giving the sector a big boost by promoting handloom textiles and its carpet industry, which produces 90% of India's carpets. The state is also promoting its handloom products through its online portal while providing opportunities to weavers for a sustainable livelihood. Some salient features that will be discussed under this policy are government schemes and initiatives, development of infrastructure in textiles, support of skill development and training. देखिए, यूपी की संभावनाओं को लोग देखें और उन संभावनाओं के बीच से अपने इन्वेस्टमेंट के लिए वे रास्ता तलाशें। हम उनको सहयोग करने के तैयार हैं। पॉलिसी उनके सामने है और उत्तर प्रदेश में निवेश फ्रेंडली माहौल बन चुका है। उनको हर प्रकार की सुरक्षा और पॉलिसी के अंतर्गत उस प्रकार की सुविधा सरकार देने को तैयार है। आप आइए, आपका स्वागत है। In a survey conducted this year, Uttar Pradesh ranked second in domestic and third in foreign tourists. It is the mesmerizing mix of rich heritage, culture, wildlife and people that draws tourists from across the world. It contributes immensely to the state's kitty, and the government of Uttar Pradesh wants to strengthen the tourism infrastructure to claim the numero uno position. To achieve that, the new tourism policy will aim at capital subsidy for various projects, interest subsidy on bank loans, waiving of conversion and development charges, etc. टूरिज्म के लिए नई पॉलिसी हम बहुत ही जल्दी लाने वाले हैं और इस नई पॉलिसी में टूरिज्म में हम लोग जो है टूरिज्म के सर्किट्स डिफाइन करेंगे, हेरिटेज के लिए पॉलिसी बनाएंगे, बेड एंड ब्रेकफास्ट के लिए पॉलिसी बनाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग जो है लैंड बैंक भी जो है टूरिज्म में क्रिएट करेंगे, जिससे कि टूरिस्ट जो लोकेशंस हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो आगे बढ़ सके। हमारा ये भी प्रयास होगा कि हम टूरिज्म के माध्यम से रोजगार भी अपने प्रदेश में दें और इसके आधार पर हम रोजगार जनित जो कार्य हैं उस पर भी विशेष रूप से बल देंगे। The contribution of renewable energy has consistently grown in India's power mix. From 10% in 2010 to 15% in 2017, the march to produce clean energy continues, and Uttar Pradesh wants to play a critical role in this front and has come up with a new policy to invite investment in the state in this sector. UP alone has a potential of producing 28 gigawatts of renewable energy. The state government has set an ambitious objective of 100% exemption from electricity duty for 10 years. State offer to purchase 100% power generated from solar park. Large-scale standalone solar projects set up for sale of power to distribution licensees. Mini grids to be installed in villages or majras. उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई सोलर पॉलिसी अनाउंस की है, जिसका लक्ष्य है कि अगले 5 साल में लगभग 10,700 मेगावाट सोलर कैपेसिटी स्टेट में लाई जाए, जिसमें से करीब 6,400 मेगावाट जो है वो ग्रिड कनेक्टेड होगी और बाकी जो है वो रूफ टॉप कनेक्टेड होगी। और मुझे बताने में खुशी है कि हम लोगों ने उस पॉलिसी के अंतर्गत बहुत कम समय में 1,000 मेगावाट के बिड ऑलरेडी निकाल दिए हैं और उसकी प्री-बिड कॉन्फ्रेंस में करीब 40 कंपनी आई थी। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। वी आर श्योर दैट वी विल हैव गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर स्टेट। Uttar Pradesh is the growth engine of India and the country's third largest economy, growing at a fast rate. A major role is played by Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation or UPSIDC and the Department of Infrastructure and Industrial Development.
At present, the state has a robust industrial infrastructure, including 15 industrial areas, 12 specialized parks, 4 growth centers, and industrial infrastructure development centers. The Industrial Investment and Employment Promotion Policy of Uttar Pradesh 2017 will strive to leverage the inherent strengths of the state while developing new ones and tackling its underlying weaknesses, considering the economic dynamics at play at the Indian, Asian, and global levels. Some highlights of the policy will be fiscal incentives, incentives for private sector industrial parks or estates, promoting mega investments, promoting SC, ST, women and differently abled entrepreneurs. हमने जो अपनी इंडस्ट्री है इसके लिए नई नई पॉलिसीज़ लाए हैं, जो सेक्टर्स जहां कभी भी प्राइवेट सेक्टर का वो एंट्री नहीं हुई, जैसे स्मार्ट सिटी का है, सीवेज का है, वाटर सप्लाई का है, रोडवेज़ का है, इन सारे सेक्टर्स में हम अपनी पॉलिसीज़ बदल कर प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने तमाम गवर्नेंस रिफॉर्म्स किए हैं और आउटरीच में हम एग्रेसिवली इन्वेस्टर्स से और उद्यमियों से हम उनके पास पहुंच रहे हैं कि आइए, उत्तर प्रदेश आपका स्वागत करता है, आप उत्तर प्रदेश में निवेश करें। उत्तर प्रदेश एक आइडियल डेस्टिनेशन है और उत्तर प्रदेश का विकास करें, अपना विकास करें, आपको अच्छा लगेगा। उत्तर प्रदेश का विकास करें और देश का विकास करें। On the other side of the break, we uncover the untapped and hidden potential of Uttar Pradesh and tell you what the various policies are that will get discussed at the UP Investor Summit 2018. Uttar Pradesh is leading in almost all sectors of a progressive India. The manufacturing MSMEs of India contribute around 6% to India's GDP, and Uttar Pradesh has around 53 lakh MSMEs, which is around 11.55% of the total number of MSMEs in the country. The state has today become the leading exporter of products in categories like handicraft, engineering goods, carpets, ready-made garments, and leather products. Under the MSME Policy 2017, the sector's growth rate is expected to touch new heights with a conducive business environment being created by the government for private players. Some of the benefits include land incentives, stamp duty exemption for various setups, EPF reimbursement, electricity charges reimbursement. इन्वेस्टर समिट के ठीक पहले 24 जनवरी को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक अपनी योजना लागू की है। एमएसएमई के अंतर्गत जो हमारा परंपरागत उत्पाद था पहले से, इसको प्रमोट करने के लिए मेरा अनुमान है कि ये कम पूंजी में व्यापक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है और विकास को एक नई गति देने वाला क्षेत्र है, वो हम लागू कर चुके हैं। अब इन्वेस्टर समिट हमारा इसकी अगली कड़ी है। Another key focus area will be IT and ITES. UP has emerged as the hub of IT/ITES sector, including software, captive business process outsourcing, and even electronics. The increasing upgradations in the infrastructure owing to rising investments along with proximity to the pool of talent are driving the IT/ITES industry's growth story in the state. Under the IT and startup policy, some topics that will be highlighted are 100% exemption of stamp duty, incentives for certifications, incentives for incubators, special incentives for Bundelkhand, Purvanchal region. See, UP has been making great strides in almost all sectors of the economy, and particularly in the IT and electronic sector. Now, this forum which is being provided by the UP, by the Global Investor Summit, it is a very major platform where we will be attracting the major players internationally who will come and invest in the states.
already a number of countries have been showing interest, and they include Taiwan, China, Korea, and these are the major players in electronic sector and electronic manufacturing today. See, the state government of UP has come out with very progressive policies both in industries and in IT and electronics. If I talk about IT and electronic sectors, we are providing major incentives to industries to come here, which include your capital subsidy, it includes interest subsidy. Then there are certain incentives for employing people of the state, the incentives for employing large number of people. And most of all, it is not these incentives alone. The most important is that the law and order situation has improved. The perception about the state has improved, and our delivery of public services has improved. So people now feel it is much easier to go to UP and do work. In ease of doing business, we have jumped up a number of steps in the last couple of months. So the entire ecosystem which is there has developed, and we foresee a very large investment coming in the IT and electronic sector in the coming years. Some of the other sectors that will also be discussed from a point of view of investment will be dairy. Uttar Pradesh plays a significant role being the largest milk producing state in India, and that's the key reason special policies regarding dairy will be made to expand this sector. Another major aspect that everyone will be talking about is civil aviation. Projects like Jewar Airport and upgradation of other state airports will be the key highlight of the summit. And last but not the least, film policy will be revisited as Uttar Pradesh has emerged as the major hub of filmmaking. Different levels of subsidiaries to filmmakers will also be announced. When we come to dairy processing, the organized sector processes only 12% of the marketable surplus of the milk. Average in India, which is processed by organized sector, that is 17%. And forward, the progressive states like Gujarat, they are processing, their organized sector is processing more than 40%. So even if UP jumps from 12% to 20% in next 5 years for the milk which is being processed by organized sector, that will amount to investment of 6,000 crore rupees. If that jumps to 25%, it will amount to 11,000 crores rupees of investment in next 5 years. So there is a tremendous scope in dairy processing in UP. UP has been the most फिल्म फेडरी स्टेट. हमको स्वर्ण कमल पिछले साल मिला है और उसके पिछले साल भी जो है हमें साइटेशन मिला है. तो यूपी हैज सच वेरीड लोकेशंस फॉर फिल्मिंग. वाराणसी है, संगम इलाहाबाद का एरिया है, इसके अलावा जो है हमारा लखनऊ है, लखनऊ का पूरा पुराना लखनऊ नया लखनऊ है. इसके साथ साथ हमारे पास जो है आगरा और ताजमहल से जुड़े हुए क्षेत्र हैं. वी हैव प्रोवाइडेड ऑल पॉसिबल हेल्प for filming of Bollywood films, for other films also. हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में एक फिल्म इंस्टीट्यूट नया बने और फिल्म सिटी भी जो है हम लोग अलग अलग लोकेशंस पर स्टडी कर रहे हैं. और फिल्म सिटी के लिए भी लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, लखनऊ में या वाराणसी में, इस प्रकार हम लोग जहाँ भी संभव होगा इन्वेस्टर्स की आवश्यकता के अनुसार फिल्म पॉलिसी में जो भी लाभ हो सकता है वो देंगे. So gear up as Uttar Pradesh is all set for the Mega Investor Summit 2018 on 21st and 22nd of February. This will be a platform to showcase the investment opportunities and potential in various sectors in the state to bring the best minds in the world together under one roof. And above all, this summit will promote Brand Uttar Pradesh. Focus, ideate, innovate, enable.